Hello everyone and very good afternoon. I waited for you all to join for another, like from last 4 minutes I have been waiting, but now I feel like I should start. So आज के क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कैपेसिटर. ओके, तो आज के क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है. देन वी विल अंडरस्टैंड कि कैपेसिटेंस क्या होता है. एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिस तरह से हमने क्लास 10th में पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. एंड वी विल आल्सो रीड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स लेटर इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो आज के क्लास में वी विल बी कवरिंग दिस थिंग्स ब्रॉडली. So let's move ahead now. What is capacitor in first place? So capacitor is a system of two conductors, done, and they are separated by an insulator. So first of all definition को देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो कंडक्टर होगा और उन दो कंडक्टर्स के बीच का जो स्पेस होगा वो किस चीज से फिल्ड होगा. That will be filled with insulator. It can be vacuum, it can be air, it can be any other dielectric. Dielectric means insulator. Okay, so capacitor is this. Now what is capacitance? So basically capacitance talk about the capacity of capacitor. Then what is the function of capacitor? Capacitor is system of two conductors separated by some insulator, right? So why we are having it? To store electrical charge, यानी कि to store and collect energy in the form of electrical charge. ठीक है. So like we have studied electrostat. Electrostat में आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको कोई भी r रेडियस का आप ले लो, इस पे चार्ज आप रख सकते हो, है ना. वी हैव स्टडीड कि अगर स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज क्यू है तो पोटेंशियल बताओ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये बताओ. सो कहीं ना कहीं हमने ये किया कि हमने कंडक्टर्स पे चार्ज को रखा एंड कंडक्टर वाज एबल टू कीप द चार्ज ऑन इटसेल्फ, राइट. सो वी कैन सी कि हाउ मच चार्ज अ कंडक्टर कैन स्टोर ऑन इटसेल्फ एंड दैट विल बेसिकली डिफाइन इट्स कैपेसिटी, दैट इज इट्स कैपेसिटी, राइट. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे समझना कि क्या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंफिनिटी हो सकता है, क्या ये कुछ भी अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है? तो डेफिनेटली नहीं कर सकता. इट विल हैव सर्टेन capacity and that capacity will have certain limit. Beyond that it cannot. Beyond that, if we give it charge will start leaking. Again, we can explain this leakage with what I have taught you in electrostat, where I told you like अगर हमारे पास uneven surface of conductor है, चलो इसको explain करते हैं. So I'm saying capacitance has a limit. I'm saying what? Capacitance has a limit. Now the question is, it has a limit. How? Why and how? ठीक है. So that we will explain now. तो मैंने तुम लोगों को ये बताया था, ये एक्सप्लेन करने से मैं पहले तुम लोगों को रिकॉल करवा दूं कि मैंने ये बताया था कि अगर सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस है, उस पे आपने चार्ज दिया तो चार्ज हमारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है. सो चार्ज बेसिकली जो सरफेस जिसका रेडियस क्या होगा, मैंने सबको बताया था. जैसे हाय गुड आफ्टरनून. तुम लोग बहुत लेट ज्वाइन करते हो यार. आई वेटेड. देखो 1 घंटे की क्लास होती है ना, वी हैव टू फिनिश अ लॉट. मैं कितनी बार रिक्वेस्ट करूँ तुम लोगों से, मुझे समझ नहीं आता. आई वॉन्ट यू पीपल टू ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि हम सो चलो मैं एक बार और तुम लोगों के लिए रिवाइज कर दूं अभी तक मैंने क्या बोला. सो बेसिकली हम लोग आज के क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर कैपेसिटर. ठीक है. और कैपेसिटर में हम लोग आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. अगेन कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर होता है सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर. तो कैपेसिटर दिखेगा कैसा? हमारे पास दो कंडक्टर होगा जो कि सेपरेटेड होगा बाय सर्टेन डिस्टेंस
और उस सेपरेशन के बीच में क्या होगा, इंसुलेटर होगा, दैट इज डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर को हम लोग और क्या कहते हैं, इंसुलेटर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद मैंने ये बताया कि कैपेसिटेंस होता क्या है। सो बेसिकली कैपेसिटेंस क्या है कि जो भी कैपेसिटर हमने अभी डिफाइन किया उसका कैपेसिटी कितना है टू स्टोर द चार्ज, यानी कि बेसिकली कैपेसिटेंस इज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू कलेक्ट एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, सो कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज। अब देखो क्या कैपेसिटेंस कुछ भी हो सकता है, इंफिनिटी हो सकता है, क्या हम जितना चाहे उतना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी कंडक्टर के ऊपर रख सकते हैं, रख सकते हैं क्या। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर चार्ज रख रहे थे, है ना, और उसकी वजह से हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था। यानी कि इट इज पॉसिबल टू कीप चार्ज ऑन द surface ऑफ कंडक्टर, राइट, इट इज क्वाइट पॉसिबल। next thing is next thing is can it keep infinite amount of charge on its surface? So that I was explaining, the capacitance has a limit, it cannot keep infinite amount of charge on its surface, there is limit to it, so there is some finite capacity, that is capacitance. But the question is why, how then, so that I was explaining here. So when I was teaching, I feel like today students from both the regions have joined, from Hyderabad region and from Pune region definitely, and also from Hyderabad region, I guess. So today I will be using a bit of more English in the classroom so that they can also understand the thing. Am I correct? And Pune region students, you must be understanding the language, है ना? You people are very much smart. चलो. So, so I taught you in electrostat that if you are giving charge to the surface of conductor, and if surface of conductor has not uniform radius of curvature, the one you can see here, so it has not uniform radius of curvature. And then I told you that charge getting stored or charge getting distributed on the uneven surface of conductor will be directly proportional to radius, means the one which has higher radius will store more amount of charge, and the one which has lower radius will store less amount of charge. And then there was one more thing, that is charge density was inversely proportional to the radius. So if I talk about charge density, then in terms of charge density, this area will be highly dense in terms of charge, because this is a pointed end of the conductor. This end has a radius almost equal to what? 0. Okay? So if radius is almost equal to 0, sigma will tend to infinity. That is, it has very large amount of charge density on its area. Okay? Now, if sigma is high, just in the previous class, I told you when I was finishing electrostat, then I told you if there is a conductor and if conductor has a charge density of sigma, then just in front of the conductor, value of electric field will be sigma by epsilon. That I told you, right? So this is sigma by epsilon. Now coming back to this diagram again, since this is a non-uniform surface of conductor, so what will happen in front of different regions, electric field will be different because sigma at each point is not same because of different curvature, right? So in this region, electric field will be very much high. And what will happen if electric field is very much high? This is given in your NCERT. Suppose, अब एक लॉजिकल बात करते हैं, सपोज कर लो this curved thing is kept in air. So air means what? Air is insulator. It has no free charges, right? Insulator, no free charges. It means whatever atom is there in the air, that is neutral. So let's take one neutral atom here. So मैं atom को थोड़ा exaggerate करके draw कर रही हूँ, बड़ा draw कर रही हूँ, so that you can understand it in a more better way. So this is the atom. ठीक है? So atom will have electron in its outermost orbit. So let's say there is an electron. And in this pointed region, there is so much charge density
that in this region electric field is very high. So what this electric field will do, this electric field will apply force on this outermost electron. And if that force is strong enough, what can happen? It can pull the electron out. And in that case, this atom will get ionized. And the moment atom will get ionized, what will happen? Media will no longer remain insulator, it will become conductor. And if media is becoming conductor, then what will happen? Now look at here. Suppose मैंने एक यूनिफॉर्म सरफेस लिया, इस पे कुछ चार्ज पॉजिटिव मैंने दिया, ठीक है? I am storing charge on it, and I'm increasing charge on it. Then from some outside source, I'm just supplying unrestrained amount of charge to it. Then at a certain instant, what happened? Electric field became 3 into 10 to the power 6 volt per meter. Then at this value of electric field, atoms of air will become from neutral to charged. They will get charged. ठीक है? So air will become conductor. अब air के पास क्या है? Conductor air हो गया है, since ionized हो गया है. Air के पास positive और negative ions होंगे, है ना? So positive, negative ions will be in the surrounding of this storage, right? So this positive charge will attract the negative charge. This positive will attract the negative charge. Then what will happen? Positive charge on this surface will start disappearing. That is called leakage of conductor. That is called leakage of conductor. So what I want to understand you is, you cannot store infinite amount of charge on the conductor. There is a limit to it. How much limit? Up to the extent where electric field is not strong enough to ionize the insulator. In case of air, electric field should be less than 3 into 10 to the power 6 volt per meter. And this electric field will depend on कि इसके surface पे कितना charge है. So there is limit to how much you can store on the capacitor. And that is why we define capacitance. Anyone having any doubt? Anyone having any doubt? Chalo, so many of you have joined through your name. Thank you so much. I don't know they are of Pune region or what, but I can see so many names here today. And that is good. Anyone having any doubt? किसी के पास कोई डाउट है? If not, then you can also tell me no. Like you are free to write in the chat box. Huh? Let me know if you have any doubt. So, like what we studied till now, we studied capacitor. Capacitor is system of two conductors. If there are two conductors, then that is separated by what? Separated by insulator. Done. And ahead in the capacitor, you will see that कि अगर एक के ऊपर positive charge है, then you will definitely see another has negative charge. Sorry, let me draw it properly. जैसे तुम लोग जो कॉमन जो कैपेसिटर देखते हो, चलो मैं उसी से समझाती हूँ तुम लोगों को. जैसे तुम लोगों ने जो कैपेसिटर देखा होगा कुछ ऐसा हो, ठीक है? So system of two conductors separated by insulator. Let's say this is air, है ना? You must have seen one has a positive charge and another has what? Another has negative charge. We prefer that on one plate there is positive and on another plate there is negative. We prefer this. Why we do this? Why we do this? Why? This is my question. I want you to think over this. इसका आंसर भी previous explanation में है. Whatever I explained here now, answer is here only. You just need to think a bit. So I want you to think over it कि हम लोग जब plates लेते हैं तो एक पे positive दूसरे पे negative क्यों रखते हैं? That is my question. So I want you to think over it. Done it? So we studied capacitor क्या है? System of two conductors separated by insulator. Capacitance क्या है? Its capacity to store charge. Capacitance will be finite. It cannot be infinity. After certain value, capacitor will start leaking. Leakage of capacitor should be there in your head. क्या है? ठीक है?
चलो अब हम लोग पढ़ते हैं पहले स्फेरिकल कैपेसिटी, ठीक है। वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, दैट यू विल डिस्कस अमंग योरसेल्फ एंड ट्राई टू नो कि क्यों होता है, ठीक है। दैट इज योर होमवर्क, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पीपल अप्लाई योर ब्रेन, दैट्स इंपॉर्टेंट। नाउ स्फेरिकल कैपेसिटर देखो, सपोज कर लो मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया एंड आई एम गिविंग ऑन इट पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज विल लाई ऑन इट सरफेस, ये पूरे थ्रू आउट द सरफेस है, मैं थोड़े रीजन में ड्रॉ कर रही हूँ। And then what I'm doing is I am also taking another conductor, spherical conductor like this. So this is also what? This is also conductor. Conductor means it will have three positive and negative charge. So positive charge on first sphere will attract the negative charge of this sphere. Sorry, ये हवा में नहीं रहेगा, इसके surface पे होगा negative. ठीक है, मैं थोड़ा अलग ड्रॉ कर रही हूँ, but that is not in air, that is on the surface, on the inside surface of second sphere. ठीक है, so its positive charge will go up on the outside surface. Done. So how we create a spherical capacitor? We do one thing, we connect it with or to the earth, we connect it to earth. Earth क्या है? Conductor है. So what it will do, it will take up the positive charge of the outside surface. Negative charge of outside surface will not be able to reach to the earth. क्यों? Because this negative charge is bonded by this positive charge. So earthing का use मैंने क्यों किया, earth क्यों किया? Because I wanted capacitor like this. One plate has a positive charge and another plate has a negative charge. And that is why what I did is outside surface पे जो positive charge गया था उसको मैंने earth को भेज दिया by connecting it with earth. This is called earthing, right? So कुछ ऐसा किया मैंने, तो तुम्हारा spherical capacitor will look something like this. This is this. Now if we are told calculate the capacitance of a spherical capacitor, तो सबसे उससे भी पहले हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, राइट? सो जस्ट नाउ इन द एक्सप्लेनेशन आई टोल्ड यू, जो कैपेसिटेंस होगा लाइक on the surface of conductor you cannot store infinite amount of charge. Done. So it will depend on how much electric field it is generating in the surrounding or how much potential it is having, right? So capacitance will be directly proportional to potential of the conductor or potential difference between two set of conductor, right? So इसको आप V ले लो, ठीक है? Now this proportionality constant is your what? Sorry, what I'm writing. Extremely sorry. Sorry, please. I wanted to say Q amount of charge getting stored on the capacitor or conductor will be directly proportional to potential getting created, right? And this proportionality constant is called capacity. Okay. So you already know why Q is directly proportional to potential. I explained the leakage of charge, right? So from there it is coming. Proportionality constant is C, that is called capacitance. Okay. Here we will try to calculate the capacitance for spherical capacitor. Done it. So for that, what we need to do here, V is what? Just read the formula carefully. This V is what? This is potential difference. ठीक है, इसको ध्यान से देख लो. This is potential difference between conductors. क्योंकि in capacitor we are taking system of two conductors, right? Separated by insulator. So V here is the potential difference between these two. Q is charge stored on them. C is what? Capacitance. So let's calculate the capacitance of this thing. How we will do? Formula use करेंगे, Q equal to CV. Now what is the potential difference between these two capacitors? It will be what? क्या होगा बताओ? Anyone can tell me the formula? Formula also you can use here very much easily. See, outside surface is connected to the earth. So whatever is connected to the earth has potential of 0, right? So outside surface has a potential of 0. Now let's talk about the inside sphere. So inside a sphere के लिए के surface पे potential क्या होगा? So potential on the surface of a smaller sphere
because of plus q charge will be how much? So potential because of plus q charge will be how much? kq by a. And potential because of negative charge on the larger sphere, what will be the potential because of minus q charge on the surface of a smaller sphere? तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हो, if there is a sphere and there is a charge q on the surface, then inside electric field is zero and potential at each point. Yes, yes, Srujana, very good, very good. Everyone should text like this. It is very good. So electric field zero, it means potential will be constant throughout. That will be equal to what is on the surface. So you will write here kq by a, right? So यहाँ पे sorry b है ना, यहाँ पे बड़े के लिए b radius है. So potential because of minus q on the surface of a smaller sphere is how much? kq by minus kq by b. Why minus? Because negative charge. So what is the potential difference? That is b. b will be b plus q. क्या करोगे? माइनस सॉरी v प्लस क्यू नहीं, एक सेकेंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. Potential on the smaller sphere minus potential on the larger sphere, right? So potential on the larger sphere is what? Zero. And on the smaller sphere it is how much? kq by a minus kq by b minus zero. This is the answer, right? So potential difference you have. Now calculate the c. c को आप निकाल लो. So c is equal to how much? q by v. So q को q लिखो और by v करोगे. So by v करोगे कितना आएगा? kq. How much it is? ab. Am I correct? c is equal to q by v, right? q by v करोगे क्या आने वाला है? चलो मैं पूरा ही लिख देती हूँ to avoid any sort of confusion. So v को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम लोग. kq कितना आएगा? ये b minus a by ab. So यहाँ पे आप लिख डालो kq b minus a by ab. So what will be the answer? q will get cancelled. k को आप ब्रेक कर लो. k क्या होता है? 1/4 pi epsilon naught. So it will become 4 pi epsilon naught ab divided by b minus a. Again, this will be epsilon naught if it is vacuum. If it is not vacuum, then it will be some epsilon, right? So this is this. Okay, so this is spherical capacitor. Now spherical capacitor, there is also one case where the radius of largest sphere, that is of b, is how much? It is infinity. Done. In that case, what will be the value here? In that case, what will be the value? What will be the value? Can anyone suggest me? If b tends to infinity, in that case, if b tends to infinity, क्या लिखोगे? Can anyone suggest me? Okay, you will do that. You will do, if you're doing this approximation, that is negative plate will not exist, right? For that case, you can also calculate. Now, what I wanted to tell you is if there is two system of such conductors, then how you will calculate the capacitance. So basically, I told you how to use the formula. You can also do one thing. जैसे यहाँ पे तो हमारे पास formula था, so we have put here the formula. What if there is no formula? So in that case, space between capacitor is this. This is the space between capacitor, right? So at any point, draw a imaginary plate of the same shape. Done. And try seeing what is electric field here. So what will be electric field here? Electric field because of larger sphere will be zero because this is the inside point, and because of a smaller sphere, this point is outside. Electric field will be how much? It will be kq by r ka square if this sphere has a radius of r. Why I am telling you this? Because maybe there is no formula for potential on the surface of one and potential on the surface of b. Then how you will calculate the potential difference? So go with electric field.
because we can calculate potential difference easily with the help of electric field. We know one formula, dV equal to minus E dot dl. We know this, right? So here you apply this dr. तो यहाँ पे क्या करोगे? dr, we are moving in this direction. Electric field because of plus q charge is also in this direction, right? So E dot dr, this is minus E dr cos 0. This is this. Electric field का value kq by r square dr. ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक निकालना है? डिफरेंस ए से बी के बीच में. ठीक है. So R will vary from A to B. So potential at a smaller sphere and potential on larger sphere. And this R will vary from A to B. So from here also you can calculate and you can get the answer. Again, if B is infinity, you can easily put the limit and get the answer. Done. So that is what you have to do. Same answer you will get. Okay. So यहाँ पे मैंने होमवर्क में दिया है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. अगेन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी बना कैसे है? एक स्मॉलर सिलेंडर है जिसपे हमने पहले पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, एंड देन देयर इज दिस लार्जर सिलेंडर, एंड ऑन लार्जर सिलेंडर व्हाट विल हैपन? चार्ज विल गेट इंड्यूस्ड, नेगेटिव, पॉजिटिव इज will be on the outside again, which will get earthed, and then there will be positive charge on the outer surface of smaller cylinder and negative charge on the inner surface of larger cylinder, and these two system will constitute what? A capacitor. Again you have to calculate the capacity, assuming these cylinders are of infinite length. ठीक है. So तुम लोग इसको calculate करोगे. This is your homework. I have already written it. So you will apply all those logic. Anyone having any doubt so far? These two questions I discussed because in higher in your exam you may find it useful. Like you need concept, right? That is why I discussed. Anyone having any doubt in here? किसी के पास कोई डाउट है? 35 लोग हो, प्लीज कोई तो बोलो. I will highly appreciate your answers. Please let me know. Tarun, Srujana, those who have answered me, Veena, Yashwant, Jinvi Bhavnagar, Shreya, Suraj, सृष्टि, पुष्पा, कोई तो बोलो. नो मैम. ओके, नो. ठीक है, चलो. वेरी गुड, थैंक यू. डन है. सो अब नाउ वी विल डिस्कस लार्जली व्हाट we have to actually encounter more, that is parallel plate capacitor. This we are going to get everywhere in every question. So parallel plate capacitor का क्या मतलब होता है? Again they are conductors. So देखो, ये एक ऐसा प्लेट होगा, एक ऐसा प्लेट होगा, दोनों प्लेट का सर्टेन एरिया होगा, राइट? सो हियर दे लुक लाइक स्क्वायर प्लेट. सपोज कर लो दे हैव एरिया ए, ठीक है. वन इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, अनदर हियर इज गिवन negative charge. Both are given the charges. Now let's not discuss how charge is getting given and then distributed. Now let's stick to capacitor. Means one of the plate will have plus q charge on their inner surface and another plate on their inner surface will have negative charge. ठीक है. Now let's not go into the lengthy discussion of how we are giving the charge and how plus and minus is coming. Then so that I have done already with spherical and cylindrical, right? So now onward what I will say, I will simply say कि एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव है. डन. दैट इज द डिस्कशन. अब देखो यहाँ पे इनके बीच में इंसुलेटर है, ठीक है. डाइलेक्ट्रिक है, इट इज नॉट एयर, so it will have certain permittivity. Here it is given absolute. So now you must have in your head idea of the parallel plate capacitor कैसा दिखेगा. Again one more assumption will be here. These parallel plate capacitor are large enough. They are not small. ठीक है. They are large enough. Why this assumption? Because in electrostat we have learned one thing, that is your infinite seat पढ़े थे ना तुम लोग. There was a seat this kind of, and it was given certain positive charge. There were two types of seat.
positive conducting seat and non-conducting seat, and they were infinite seat, and for that we have derived the formula. If you remember, electric field ka formula was sigma by epsilon naught if the seat was conducting, and electric field formula was sigma by 2 epsilon naught if the seat is non-conducting. Remember? Okay. So same formula here for electric field we can use in the discussion of parallel plate capacitor. Why we will be able to use it? Because we are assuming that these plates are large enough. ठीक है, ये एक अच्छे खासे लार्ज प्लेट्स हैं. डन है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि विच फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल यूज हियर, दिस वन और दिस वन. कोई मुझे बताएगा 1 यूज करूं या 2 यूज करूं? चलो, let's participate in the discussion. Which one should I use? Any idea anyone can give me? 1 or 2? Yes, I got 1, 2. ठीक है. अच्छा, आप 2 बोल रहे हो. आंसर सीम्स करेक्ट, बट कैपेसिटर का मतलब होता है कंडक्टर. Two conductors separated by certain distance. Then why we are using the formula of non-conductor? Can you explain? Srujana, 1. Okay. Tarun, 1. But 2 is correct. Why it is correct? Why we are using non-conducting wala formula? नहीं, not because of dielectric. Conductor and non-conductor, when I taught you in the electrostat, when I was discussing conducting seat and non-conducting seat, what difference I told you? I told you in the class, if the seat is conducting, and I am giving charge on it, what will happen? Since this is a conductor, if I am giving charge on this surface, that charge will automatically get shifted to this surface also. So if it is a conductor, charge will get distributed on the both surface. But if it is a non-conductor and I'm giving charge on this surface, it will remain on this surface. It will not go on this surface, right? So non-conductor seat का characteristic क्या है? Charge will remain on the one surface. Conducting seat का characteristic क्या है? Charge will get distributed on both the surfaces. ठीक है. सो अगर सीट के एक साइड पे ही चार्ज है, देन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था ये, और अगर दोनों साइड पे चार्ज है, देन द फॉर्मूला वी गॉट वाज दिस. Coming back to our case, what happened? This is a conductor, right? This is a conductor. This is also conductor. What I did is, suppose I gave it plus Q charge and I gave it minus Q charge. What will happen? अगर यहाँ पे सिर्फ एक प्लेट होता, सपोज करो एक प्लेट है, यहाँ पे आई एम गिविंग इट प्लस Q charge. This plus Q will get distributed half on the both surface. So here plus Q by 2 and here plus Q by 2. But since in the vicinity, in the surrounding, there is another plate and on which we are giving negative charge, what will happen? This positive, this negative will attract each other. So they will try to come as close as possible. So as close as possible, कहाँ हो सकता है? Its inner surface. Its inner surface and its inner surface, right? They cannot go towards each other क्योंकि यहाँ पे insulator है. They cannot travel towards each other because there is insulator, right? So charge distribution कैसा है? Only on the one surface. So electric field formula, if we are using, we will use of what? Insulator. Yes, Tarun. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का अब मुझे फॉर्मूला बताओ इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना होगा. अब चलो, अब हम लोग फॉर्मूला प्लेनली यूज करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. अब तुम लोग मुझे फास्ट बताओगे. मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लेने वाली हूँ. एक लिया ये एक लिया ये और तीसरा लिया ये पॉइंट. अब मुझे बताओ 1, 2, 3 पॉइंट्स पे कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगा. लेट मी नो. I would highly appreciate your answers and your participation. Everyone. Janvi, Simoka, Tarun.
एंड सृजना, जेनवी चंद्रपुर। चलो जिन्होंने रिप्लाई दिया है उनका नाम पहले ले लूं। भरत, अभिजीत, भुवन, जेनवी भावनगर, वाई यू पीपल आर सो साइलेंट। जेनवी खेड़ा, यू वर फर्स्ट टू ज्वाइन, जल्दी से बताओ। ओके, नो आंसर, ठीक है कोई नहीं। तिमोगा, टू पे क्या होगा? ओके, दैट इज प्रीवियस आंसर, सॉरी सॉरी। 1 and 3 इट इज 0। ग्रेट, वेरी गुड। अब तुम लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, एट वन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज किधर होगा? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, एंड बिकॉज ऑफ नेगेटिव एट वन कितना होगा? इधर। सो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू विल बी व्हाट? ओके, जेनबी सिमोगा, टू पे 0 नहीं होगा यार, सही से डायरेक्शन देखो। And magnitude because of both plate will be how much? Sigma by 2 epsilon naught, sigma by 2 epsilon naught. They are equal in opposite, so here it is 0. Similarly at 3 you can check the direction. Because of negative charge it is this, because of positive charge this is this. So again here directions are opposite. Electric field will be here also 0. Inside at any point, if you see at this point, because of positive charge electric field here, because of negative charge electric field this, they will get added. So electric field at point 2, that is at any inside point, will be equal to how much? Sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught, and that is equal to sigma by epsilon. ठीक है? Yes, Sruchani. ठीक है, करेक्ट। सो ओवरऑल एडिशन करने के बाद सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर आउटसाइड पॉइंट, इफ आई से एट पॉइंट 1, 2 और एनी आउटसाइड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है ना? डन है। चलो नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन हमें पता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डीवी इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट डीएल। This is this, right? So if I talk about here, this has a positive charge, this has a positive charge, this has a negative charge. Electric field is in this direction. Suppose Carlo separation is D, area of the plate is A, suppose, and this is air. Okay, what will be the potential difference between these two? What will be the potential difference? Batao. If I calculate, a potential of positive plate will be higher, potential of negative plate will be higher. Let's talk about the magnitude plainly. So dv equal to e, मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रही हूँ, नेगेटिव साइन को मैंने हटा दिया यहाँ से, या फिर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे के कैलकुलेट करते हैं। डन है। अब देखो इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं, v प्लस माइनस v माइनस निकालना है, यानी कि in this direction we are moving in the direction of electric field. What will happen? Potential will decrease, right, from positive plate to negative plate. And what will be the value of potential difference? E dot dl कर दो चुपचाप, E into dl का वैल्यू कितना है? D है, और D E के डायरेक्शन में है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? cos 0. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ED, ठीक है। E का वैल्यू कितना है हमारा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू D. This is your potential difference, right? Done it? And this is V. In our formula, Q equal to CV. V is potential difference. Here it is sigma by 2 epsilon naught. Sorry, not 2 epsilon naught. तुम लोग प्लीज करेक्ट किया करो अगर मैं कहीं कुछ गलत लिखूं तो। देयर इज हाई चांस आई कैन राइट, माइंड स्लिप होता है, ठीक है। सो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वी गॉट दैट, राइट। सो कैपेसिटेंस क्या होगा? जल्दी से मुझे फॉर्मूला बताओ। कैपेसिटेंस के लिए क्या लिखोगे? Q इक्वल टू सीवी। जल्दी से राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट यू आर गेटिंग। क्या आएगा बताओ।
क्यू लिखो, सी लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, यही आया है ना। सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट, राइट। सो क्यू है, सी है, इनटू सिग्मा को क्या लिख सकते हो, अगर इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा कैन बी रिटन एज क्यू बाई ए, राइट। सो यस सृजना, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग इन सो मच एफर्ट। सो सिग्मा को क्या लिखोगे, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। क्यू क्यू कैंसिल होगा, सी का वैल्यू क्या दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, इन दैट केस सी को क्या लिखोगे इन एनी मीडिया, एप्सिलॉन ए बाई डी, ठीक है। एंड इफ यू रिमेंबर, if you remember your electrostat class, when I was discussing Coulomb's law, I told you one thing, that is epsilon equal to epsilon not epsilon r, and this epsilon r is relative permittivity, right? So अगर इसको इस टर्म में लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, epsilon not a by d into epsilon r, और इसी एप्सिलॉन आर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी तो बोलते ही है, इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट वी विल रीड लेटर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। दिस इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, often indicated by k, so k is nothing but epsilon r, that is why I am discussing it here, क्योंकि आगे we will be highly so much dealing with k, that is डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। I hope it is clear now. चलो, फोर्स बिटवीन प्लेट्स क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी फोर्स बिटवीन प्लेट्स कैसे निकालेंगे, सेम एज वी कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कैसे निकालते थे, जैसे तुम्हें मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, मैं पूछती हूँ व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज, व्हाट यू विल डू, फोर्स का एक तो कूलम्स लॉ से हमने फॉर्मूला पढ़ा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, एक पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड से, फोर्स को क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट एट दैट पॉइंट इनटू चार्ज। सो हियर आई एम कैलकुलेटिंग फोर्स ऑन दिस चार्ज। So let us see what is electric field because of capital Q charge over here. कितना होगा, KQ by, if this distance is R, then R square. So force will be what, this, in this direction. So this is again nothing but Coulomb's law, right? F equal to Q into E. Same thing I will apply here, F equal to Q into E. I am asking what is force acting between plates. So let's say I am saying यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, ठीक है, मैंने सारे पे पॉजिटिव दे दिया। These are the mistakes I do. Sorry. So this has negative charge. Now, suppose I'm asking what is the force acting by positive plate on the negative charge? What is the force acting on negative plate because of positive plate? So because of positive plate, what is the electric field felt by the negative plate? So I'm saying कि अगर इसको तुम प्लस क्यू चार्ज बोलते हो तो इस प्लस क्यू चार्ज का इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा। So I told you electric field because of one plate is how much? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिर्फ इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन प्लेट्स इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सम ऑफ two electric fields, one because of positive, another because of negative, sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught. So because of one plate electric field is how much, sigma by 2 epsilon naught. So force will be how much, charge on negative plate, that is q, साइन के साथ नहीं लिख रही मैं, into electric field there, that is sigma by 2 epsilon naught. So force will be q into, q को ब्रेक कर सकते हो, q by a 2 epsilon naught. So this is q square by 2a epsilon naught. This is force acting. Common mistake that students may do is electric field का value यहाँ पे जब force के formula में रख रहे हो तो electric field का value you don't have to put as sigma by epsilon naught. It will be sigma by 2 epsilon naught because we are calculating force because of one plate on another. So electric field because of one plate getting felt by another you need to write. ठीक है? So here electric field will be sigma by 2 epsilon. That is what I wanted to mention.
Now what will be energy stored on the plate? How to calculate it? How to calculate this? किसी के पास कोई हिट है? कैसे निकाले बताओ? सपोज कर लो, ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, कुछ ऐसे, और ये जो नेगेटिव प्लेट है वो बहुत ही दूर है, बहुत दूर है। सपोज कर लो इनिशियल सेपरेशन क्या है, आर ऑलमोस्ट टेंड्स टू इंफिनिटी, सो दे आर इनफाइनाइटली सेपरेटेड, and we have to form a capacitor where this positive plate, the same positive plate and same negative plate are at a separation of how much? D. Okay. So what we need to do is we need to bring this plate closer. Okay. But we don't need to bring it closer क्योंकि ये already इसको attract करेगा, और ये attract करेगा तो negative plate accelerate होगा. But we don't want it to accelerate. We simply want it to come and stay here at rest. So if it is staying here at rest, despite attractive force present, it means some work we are doing to make this setup possible, right? So we will move this negative plate here to this separation in such a way such that it won't accelerate. It means whatever force this positive plate is acting, the same amount of external force we will act on this negative plate, such that net force acting on the negative plate is 0 and it is simply coming here. Net force is 0. Without acceleration, it is coming here. Now, can you tell me what will be the energy stored here in at a point where separation is D? Can anyone tell me? You can also calculate in terms of potential. You can do it. Work done per unit charge पढ़े हो ना? Work done per unit charge क्या होता है? Potential difference, right? So initially when plate is here, potential because of positive charge here will be what? 0. Because they are infinitely separated. Now when the plate is here, potential because of positive charge will be how much? It will be something. How much? Bolo? Are you getting me or not? देखो, I'm trying to make it as easy as it can be. इनिशियल मैं लिख रही हूँ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? इनिशियली दे आर इनफाइनाइटली सेपरेटेड. जस्ट रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट व्हिच आई टॉट यू. इफ टू चार्जेस आर एट इंफिनिटी, their potential energy is 0. So here also two plates are initially infinitely separated. Their potential energy is how much? It's 0. Final potential energy will be how much? So just see, because of positive plate, here potential will be how much? Here electric field is how much? Sigma by 2 epsilon naught. Distance is how much? D. So electric field into D will be potential, right? क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, so that theta is 0. सिंपल है. So work done will be how much? Now Q into potential sigma by 2 epsilon naught into D. इस टर्म को समझने में किसी को दिक्कत है? जैसे अगर तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो तो मैं तुम लोगों को टू चार्ज सिस्टम से समझाती हूँ. यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है. यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर, और डी, इफ दिस डिस्टेंस इज डी देन के क्यू बाई डी. एंड इफ यू आर ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू हियर, द वर्क गेटिंग डन विल बी दिस सेम थिंग आई हैव यूज्ड हियर, ठीक है. अगर यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी लिखा टू मेक द पोटेंशियल फॉर्मूला, and then potential formula से Q को multiply किया. Done it? So use it now. Q into D into sigma को क्या लिखोगे? Q by A, और यहाँ पे क्या है? Into 2 epsilon naught. अगर इसको ध्यान से देखो तो Q square by 2 epsilon naught A by D, और epsilon naught A by D क्या होता है? C. So this is Q square by 2C. So energy stored on the system is how much? Q square by 2C. किसी को समझने में प्रॉब्लम है?
किसी को दिक्कत है तो बताओ, आई विल टेक योर डाउट. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस? कोई तो बोलो हाँ या ना. कुछ भी बोल सकते हो. यू कैन आस्क ऑल्सो, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन दैट. You can let me know if you're facing any problem, any issues. No doubt is big or small, doubt is doubt. Initially मैंने बोला पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है. डी सेपरेशन यानी कि इस पॉइंट पे हमें एक नेगेटिव चार्ज का प्लेट लाना है. बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी. क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस डिस्टेंस इज डी, सो पोटेंशियल इज दिस. Initially negative plate is at infinity, here potential is 0. ठीक है. So initial potential energy of the system is 0. Final is charge on the plate coming here into potential at this point, and that is your how much q into this. Okay, so this much energy will get stored. Done है. चलो ठीक है. I hope you have understood. अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. नाउ वी कैन ऐड, जैसे अभी तक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सारी चीजें पढ़ ली. हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, फोर्स क्या लगेगा, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, उस पे एनर्जी स्टोर क्या होगा. ठीक है, एवरीथिंग वी स्टडीड. नाउ व्हाट वी नीड टू स्टडी इज, वी नीड टू स्टडी कि हाउ वी कैन कंबाइन कैपेसिटर्स इन सीरीज. ओके, सो कैसे कंबाइन कर सकते हैं. देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे तुम रजिस्टर्स को सीरीज में ऐड करते थे, एंड टू एंड कनेक्शन. सो हियर आल्सो एंड टू एंड कनेक्शन वी विल मेक. So this is a positive terminal, this is a negative terminal. What will happen? Positive terminal will send positive charge and negative terminal will send negative charge. लेमन टर्म में समझते हैं, ठीक है. सो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है. नाउ वी कैन एक्सप्लेन के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, दैट क्यों वी कैन एक्सप्लेन. बट फॉर नाउ आई फील लाइक लेट्स मेक इट सिंपल and let's keep it like if this has a negative charge then this plate will have positive charge. So here it will be again, here also it will be negative charge, but I can explain to you why this plate will get positive charge. Why this will get positive charge? Kyunki in the capacitor or throughout in the electrostat there is a concept called isolated system. ठीक है, आज के क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगी इस सिस्टम को एक्सप्लेन करके. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम विच इज नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी, विच इज नॉट कनेक्टेड टू एक्सटर्नल एनी सोर्स. ठीक है, तो इफ यू सी हियर केयरफुली, दिस इज दिस कैपेसिटर, दिस एंड दिस. सो इफ यू लुक एट अगेन दिस वन, दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, सपोज कर लो इनिशियली ये बैटरी से नहीं कनेक्टेड, ये बैटरी से नहीं कनेक्टेड है. देन दिस प्लेट हैज अ जीरो चार्ज, दिस प्लेट हैज अ जीरो चार्ज, एंड ओवरऑल दिस आइसोलेटेड सिस्टम, दिस और लेट्स फॉरगेट कि आइसोलेटेड क्या है. ओवरऑल अभी इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज क्या है? जीरो. सपोज व्हाट आई डिड इज नाउ आई इंसर्टेड हियर अ पॉजिटिव terminal and negative terminal, that is I connected a battery. So this will get positive charge. Now this plate is not isolated because it is connected to the positive terminal of battery. Similarly, this plate is not isolated, it is connected to the negative terminal of battery जो कि इसको चार्ज सप्लाई कर सकता है, right? But still these two plates are not connected to the battery. So इनका अभी भी total charge क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. ठीक है. So this is only possible कि अगर इस पे नेगेटिव आता है देन इस पे सेम पॉजिटिव जाना चाहिए. ठीक है, दैट इज व्हाई आई सेड कि इस पे पॉजिटिव होगा. और अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट से अगर इस पे पॉजिटिव आया है तो इस पे नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज दीज टू विल आल्सो कंस्टिट्यूट आइसोलेटेड सिस्टम, दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी. ठीक है, सो यहाँ पे पॉजिटिव तो आया बैटरी से, यहाँ पे नेगेटिव कैसे हुआ? With the concept of capacitor, let's say explain कर सकते हैं, but let's keep it simple.
क्योंकि कैपेसिटर में हमने पढ़ा कि अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे हम क्या रखते हैं, नेगेटिव। सो लेट्स कीप इट नेगेटिव। उसके बाद ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कैसे हुआ, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। अगेन दिस इज पॉजिटिव बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर, एंड ये नेगेटिव कैसे हुआ, थ्रू आइसोलेटेड सिस्टम। सो दिस इज how we will move ahead. In the next class, we will read how we will combine capacitors in series and parallel. This thing we will discuss in what, in the next class. I just want your 1 minute for the class feedback thing. So I've launched a poll. Please, everyone answer. Everyone, please. किसी को कहीं कोई डाउट है तो बता दो। किसी को डाउट है? तो मैंने तुम लोगों को होमवर्क में क्या क्या दिया है? होमवर्क में दिया, एक तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना था, और दूसरा मैंने ये दिया कि कैपेसिटर के एक प्लेट पे पॉजिटिव तो दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज ही क्यों रखते हैं, व्हाई। दैट वाज अनदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। उसके बाद क्या था? उसके बाद कुछ भी होमवर्क नहीं है, ठीक है। सो यू नीड टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सोचना और जरूर बताना। चलो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। अगर तुम लोग मेरे क्लास को फॉलो किए हो तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। Which one is conducting or not? We are taking conductors. We are already taking conductors. By looking at, we cannot say no. Or your doubt is different. कुछ और है क्या? I'm not able to understand your question. Can you explain? देखने से कैसे बता सकते हैं कंडक्टर है कि नहीं? चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से बता सकते हैं। जैसे अगर कंडक्टर है तो उसके स्पेस में चार्ज नहीं रहता, हमेशा सरफेस पे चार्ज होता है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इफ देर इज ए नॉन कंडक्टर, then non-conductor will have charge in their space, but if there is a conductor, conductor के हमेशा surface पे ही charge होता है। So by looking at charge distribution you can say if it is a conductor or not. Otherwise if you remove the charge, by looking at we cannot, but with the charge distribution we can, right? Am I clear? Okay, thank you so much. Thank you. Thank you everyone, and take care of yourself. We'll meet in the next class. Till then, bye bye, take care.